Welcome to Guru Krupa Science College, Station Road, Baleshwar. Online summer course for new +2 first year science student. Welcome to another e-class of Guru Krupa +2 Science College. पिलामाने घरे सब सुस्थ रुह, मास्क पिंध, हाथ को बारंबार धुओ, कहीं जो कोरोना वायरस ये गोटे मारात्मक वायरस जे कि हम तुम देखुव टीवी न्यूज पेपर रे देखुव केमती तार काय विस्तार कर तेणु से बचा हेले आमर एकमात्र माध्यम हूँ आम निजे सेफ रहा निजे सचेतन हवा अन्य को सचेतन करवा। तेणु लास्ट क्लास रे आम आठक आसवा लास्ट क्लास रे आम पढ़ी जो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर तुमको मुझे से डेफिनेशन रे आमर थिला कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच टेक्स डाटा प्रोसेसेस इट एंड गिव्स अस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तेणु से आम दुईटा तीनटा जिनस आम थिला गोटे डाटा थिला गोटे थिला प्रोसेस आ गोटे बाकी रही जाइतिला लास्ट क्लास रे गोटे थिला डाटा गोटे प्रोसेस आ गोटे थिला हमर कोन इंफॉर्मेशन। तमे इंफॉर्मेशन विषय रे आमे डिटेल्स पढिबा हेबे। तो मन रख जे डाटा प्रोसेस इंफॉर्मेशन तो डाटा प्रोसेस बाबद तो तुमको लास्ट क्लास रे मु कहि सारिछि। एबे कोन पढिबा ना एबे पढिबा में इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन काहाकू कुआ जाय, व्हाट डू मीन बाय इंफॉर्मेशन। ना आफ्टर गेटिंग डाटा मु तो टिके आगे कहि सारिथिली नेक्स्ट लास्ट क्लास रे कहि सारिथिली जे डाटा कंप्यूटर भीतर को डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर कर सारा परे व्हाट द कंप्यूटर डज। कंप्यूटर जहां भी करे ताको हमें कोन करूजो ताको हमें कोन कहूजो ताको हमें प्रोसेस बोली कहूजो। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग व्हाट कंप्यूटर गिव्स अस प्रोसेसिंग परे कंप्यूटर यूजर टू डाटा इंस्ट्रक्शन पाई सारा परे कंप्यूटर प्रोसेस करे आ प्रोसेस करी सारा परे कंप्यूटर हमको जहां प्रोवाइड करिवो ताको हमें कोन कहबा ताको हमें इंफॉर्मेशन बोली कहबा। तनो कोआ जाय जदि हमें इंफॉर्मेशन रो डेफिनेशन देखियो बुझिबा लेखो आफ्टर processing what computer provides for us called as information। तक हमें इंफॉर्मेशन बोली कहबा। अर्थ डाटा प्रोसेस हे सारला परे हमको कंप्यूटर जहां प्रोवाइड करे हमको कंप्यूटर जहां दिए ताको हमें इंफॉर्मेशन कहि परिबा, ताको हमें आउटपुट कहि परिबा, ताको हमें रिजल्ट बोली कहि परिबा। जे कोनसी नाम रे तुमे डाकी परिबो बट जेहेतु हमें डेफिनेशन रे थिलो तेनो डेफिनेशन रे हमें इंफॉर्मेशन कहि कहबा। तो मन रखियो आफ्टर प्रोसेसिंग व्हाट कंप्यूटर प्रोवाइड्स फॉर अस कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। तो मन रखियो जे हम तले डेफिनेशन हमर मोटा मोटी भाबे सरी गला। डेफिनेशन परे हमें एबे लेखिबा गुटे कंप्यूटर बेसिक स्ट्रक्चर रे गुटे तयारी करिबा, गुटे कंप्यूटर डायग्राम तयारी करिया। तमे समस्त तो जानि थिबो ता परे भी मुटी के गुटे डायग्राम के तयारी करूची आ तार डिफरेंट पार्ट्स विषय रे हम टिके पढिबा। ताले से डायग्राम ता आगो बनेबा समस्ते डायग्राम ता बनेबा। डायग्राम में तैयारी करिबा एबे तुमे आउरी भलो भाबे तैयारी करिवो। मु तुमको एटा हो जाम कंप्यूटर चित्र। जदि गोटे कंप्यूटर चित्र देखिबा एटा हो जाम कंप्यूटर चित्र। देखि ओटा चित्रटा ठीक से आसु कि नै, कवर होछ कि नै, ठीक है त कवर होछ त। तेनो हमर ई कंप्यूटर चित्र रे तमे समस्त जानिथिबो कि एटा को कोन कहै जाय। देखो ए जो डिवाइस का देखुछ ए डिवाइस टा हम कोन कहू मॉनिटर बोली कहू। मॉनिटर बोली कहू कोन कहू मॉनिटर M O N I T O R मॉनिटर। यदि हमें देखिया बुझिबा एक्चुअली द नेम ऑफ द डिवाइस इज नॉट मॉनिटर। हम तक मॉनिटर बोली कहबा कहूछु मु भी कहूछि जे कहू नै नुए हम समस्त कहूछु बट अनदर द एक्चुअल नेम ऑफ द डिवाइस इज VDU। ताको कोन कहै जाय VDU व्हिच स्टैंड्स फॉर विजुअल मन रखियो पिला माने विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कोन कहै ताको विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोली कहै जाउछि। विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोली कहै जाउछि। अच्छा विजुअल डिस्प्ले यूनिट कौन ना इट इज द ओनली डिवाइस through which
the computer can provide us the soft copy output. अर्थ एटा गोटे डिवाइस जो डिवाइस रो हमें प्रथमे आउटपुट पाई थाउ इट इज द डिवाइस थ्रू व्हिच यूजर गेट्स द आउटपुट फास्ट प्रथमे कंप्यूटर प्रथमे आउटपुट जो थे प्रोवाइड करे ताको हमें कोन कहूछु ताको वीडियो बोली कहूछु विजुअल डिस्प्ले यूनिट थ्रू व्हिच वी कैन वॉच समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर भितर हमें किछि देखिया पाई चाहिए हमें वीडियो को नबा बट तुमको सर ताले तार नाटा काहे की मॉनिटर कहै छी ना मन रखियो व्हाई इट इज कॉल्ड मॉनिटर बिकॉज़ दिस डिवाइस is used to monitor all the activities of the user अर्थात यूजर रो समस्त एक्टिविटीज को जे मॉनिटर करे ताको हमें कोन कहबा ताको हमें मॉनिटर से वीडियो करे ताको हमें मॉनिटर बोली कहबा आर अर्थ कोन ना आर अर्थ हला when user wants to enter something into the computer that will be displayed here and when user wants to get something from the computer that also displayed here सेटा भी हमर ई जगह डिस्प्ले हुए अर्थ कंप्यूटर भीतर को यूजर जहां एंटर तमे देखियो कीबोर्ड रे हमें ए स्विच टा प्रेस करबा एटी लेखा देखा जाय कंप्यूटर हमें किछ देखिया पई जायबा एटी ही देखा जाय तो से बिकॉज़ इट कंट्रोल्स इट मॉनिटर्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन यूजर दैट्स व्हाई द वीडियो इज पॉपुलरली कॉल्ड एज मॉनिटर अर्थ वीडियो जेटा हम घर हमें तोरको सारा हम घर रो टीवी यस दैट इज आल्सो ए मॉनिटर तो आज का डेट रे जते एलसीडी एलईडी जते सब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके टीवी गुडी को आसुची से सब टीवी गुडी को कंप्यूटर सहित अटैच करि हबो एंड वेयर योर टेलीविजन इज अटैच्ड टू ए कंप्यूटर एट दैट टाइम दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज मॉनिटर ताको हमें वीडियो बोली कहि परिबा मॉनिटर बोली कहि परिबा नेक्स्ट जीवा ढला मॉनिटर वाला नेक्स्ट आसला एटा को हमें जो देखुछु ए जो डिवाइस टा को देखुछु एटा को તમે समस्त जानि थिबो एटा को हमें कहू सीपीयू कोन को एटा को सीपीयू रो पूरा नाम तुमको लास्ट क्लास रे कहि सारची जार पूरा नाम हैला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कोन ताको कहा जाउची सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात इट इज द ओनली डिवाइस थ्रू व्हिच कंप्यूटर प्रोसेसेस ऑल द डाटा कंप्यूटर सब जाक डाटा तारि थ्रू रे प्रोसेस करे बट जदि हम एक्चुअल देखिया बुझिबा दिस बॉक्स इज नॉट सीपीयू ए बॉक्स ता सीपीयू नुहे हम समस्त कहउछु हम गुटे फॉर्मेट रे पढि जाइछु से फॉर्मेट रे हम समस्त सेटा को सीपीयू बोली कहउछु इवन मो भी कहि दिए कि अन्य जे कोन से टीचर होंतु सब कंप्यूटर साइंस रे टीचर होंतु से माने भी सेटा को सीपीयू बोली कहंती बट ओरिजिनली जदि हम देखिया बुझिबा दैट बॉक्स इज नॉट सीपीयू ताले ओरिजिनल सीपीयू कोटा ना द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ ए सीपीयू the actual dimension of a central processing unit is 3 cm length and 3 cm breadth मन रखियो बिला ने जे गुटे कंप्यूटर रो जो प्रोसेसर बोली कहउछु हमें गुटे कंप्यूटर रो प्रोसेसर बोली कहउछु से प्रोसेसर एक्चुअल साइज होची एक्चुअल डायमेंशन होची 3 cm लंब और 3 cm दैर्घ्य से छोटिया डिवाइस दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट डिवाइस इज फिक्स्ड इज इंस्टॉल्ड इनसाइड दिस बॉक्स से छोटिया डिवाइस को ए बॉक्स भीतर इंस्टॉल करा जायछि and that device takes all the responsibilities of data processing in a computer system ଗୋଟେ computer system रे total data processing ର responsibilities जे नेछि से डिवाइस रो नाम हला कोन से डिवाइस रो नाम हला प्रोसेसर तो मन रखिबो the processor is a small electronic device which is installed inside that box and the name of that device is called also CPU central processing unit कि मतलब processor बोली कहू and the first processor was developed मन रखिबो the first processor was developed by Intel Corporation very important मन रखिबो एटा सब Intel Corporation Intel company ना तो एनकारेट रे टीवी रे सब ऐड देखतबो it is the only company which produces very reliable processor Intel गुटे एमितिका प्रोसेसर कंपनी जे कि सबुठु रिलायबल प्रोसेसर तयारी करे Intel तेनो ए जो Intel कंपनी ये प्रथम प्रोसेसर तयारी कला इन द ईयर 1971 1971 मसिया रे हला कि 1971 मसिया रे प्रथम प्रोसेसर तयारी कला Intel कंपनी तयारी कला आ तार नाम थिला P4004 The name of first processor was P4004 which was developed by Intel Corporation in the year 1971
मन रखो तो ए जो बॉक्स ए जो छोटिया डिवाइस दैट इज कॉल्ड सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेटा को बंद कराई थी ना सेटा को एक बॉक्स भीतर रखी दिया है inside this box many equipments are there most important equipments is called a motherboard ता भीतर गोटे छोटा motherboard अछि आमे नेक्स्ट क्लास रे केबे देखिबा जे motherboard कोन ता विषय कोन अछि से motherboard ऊपर गोटे छोटिया स्लॉट अछि से स्लॉट ऊपर हमर 3 सेंटीमीटर लेंथ 3 सेंटीमीटर ब्रेथ विशिष्ट गोटे छोटिया डिवाइस टाको तारि भीतर रखा जाय सेटा हला सीपीयू सेटा हला प्रोसेसर सेटा हला सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट व्हिच टेक्स ऑल द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इन ए कंप्यूटर सिस्टम तको सर ताहले जदि आपण सेटा को सीपीयू कहिले जदि हम सेटा को सीपीयू कहबा व्हाट इज द एक्चुअल नेम ऑफ दिस बॉक्स ताले ई बॉक्स रो एक्चुअल ना कोन ताको त हम सीपीयू कहबानी ना हमें कहूछु किंतु एक्चुअली सेटा सीपीयू नुहे तार से बॉक्स रो ना कोन ना से बॉक्स रो ना हला मन रखिबो आज तो हमें समझते एटा को सीपीयू बोली कहबा एटा को प्रोसेसर बोली कहबा बट एई जो बॉक्स ता हम पाखरे अछि ताको हमें सीपीयू किबा प्रोसेसर न कहि कि आज तो नाम हे डाकिबा चेंज करबा दिस इज कॉल्ड सिस्टम कैबिनेट दिस इज कॉल्ड सिस्टम कैबिनेट और ताको हमें कहि परिबा सीपीयू कैबिनेट बोली कि कहले भूल हो ना सीपीयू कैबिनेट भी हमें कहि परिबा बेटा मतलब सिस्टम कैबिनेट को ताको हमें सिस्टम कैबिनेट किबा सीपीयू कैबिनेट बोली कहि परिबा तारा बुझियला दिस इज कॉल्ड वीडियो और मॉनिटर दिस इज कॉल्ड सिस्टम कैबिनेट inside a system cabinet many important equipments of a computers are there and out of all these things out of all these equipments another very important device is used which takes all the data processing all the responsibilities of data processing the name of that device is called CPU or central processing unit or processor next another two important things are there which is called I am samaste jani chibu this is called keyboard this is called keyboard it is a plastic board having many numbers of switches having many numbers of switches through which you can enter the text and numbers into the computer जे कंप्यूटर भीतर को हमें टेक्स्ट अल्फाबेट्स नंबर्स एगुडी को एंटर करिया पई एगुडी को इनपुट करिया पई हमें जो डिवाइस रो सहायता नो से डिवाइस हला ये कीबोर्ड जगह कहली इट इज a plastic board which is directly connected to the system cabinet and this board is used to enter the text and numbers into the computer and another device is used which is very popular in nature आज का डेट रे तम मान सब पिला को पई एटा गोटे बहुत पॉपुलर जिंस माउस तो मन रखिबो माउस इज ए वेरी पॉपुलर डिवाइस which is also called as pointing device why it is called as pointing device because with the help of the mouse we can give instruction and we can select any object displayed on the computer screen हमें कंप्यूटर स्क्रीन रे डिस्प्ले होतला जे कोनसी गोटे ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करबा पॉइंट आउट करबा पाई जो डिवाइस का व्यवहार करू ताको हमें माउस बोली कहू आउ कीबोर्ड होची गोटे से बडा डिवाइस जे के हां आउ जिंस मन रखो गोटे कंप्यूटर रे जेति की डिवाइसेस यूज हुए कीबोर्ड माउस मॉनिटर प्रिंटर व्हाटएवर इट मे बी जे कोनसी यूज हुए ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड एज peripheral devices ताको कोन कहै जाय peripheral devices कहै जाय and all the peripheral devices are connected to this system cabinet सब देखो ए system cabinet सहित कनेक्ट हेइ जाय आ system cabinet भीतर कोन अछि प्रोसेसर अछि तो प्रोसेसर controls all the activities of a computer system processor controls all the peripheral devices of a computer system गोटे computer system रो समस्त peripheral device को जे कंट्रोल करे जे मैनेज करे ताको हमें कोन कहबा ताको हमें प्रोसेसर बोले कहला सरीला तो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम कैबिनेट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम नेक्स्ट आसीबा आज हमें ताले पढिले कोन ना डेफिनेशन पढिले डेफिनेशन परे हमें देखिले बर्तन गोटे स्ट्रक्चर देखिले एई स्ट्रक्चर परे हमें कोन करबा ना कंप्यूटर डिफरेंट ए कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स देखो हमें बर्तन दिबा द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वेरियस पार्ट्स को हमें जिबा तो समस्त लेखो आर हेडिंग हो कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट्स हेडिंग कर समस्ते कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर रा कंपोनेंट्स गुडी का कोन ना मन रखिबो कंपोनेंट्स माने पार्ट्स कंप्यूटर कोन पार्ट्स अछि हे से गुडी को हमें देखिबा जेंति गुडे ह्यूमन बीइंग वेरियस पार्ट्स को नै तयारी
जे कोन जिंस को वेरियस पार्ट्स को लेके तयारी से बलिया हमरो कंप्यूटर रे कोन पार्ट्स जरा मन रखिबो द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स टोटल कंप्यूटर कंपोनेंट्स गुडी को मुख्यतः तीन भाग रे विभक्त कराई छी कोन ना फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मन रखिबो हार्डवेयर सेकंड वन इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर and third one is called as very important. Somebody says that user is not a very important component of a computer system. That is wrong, because without user the computer is useless, the computer is meaningless. Because who uses the computer को किए व्यवहार करिवो यदि यूजर नहीं तले कंप्यूटर बेकार, कंप्यूटर मीनिंगलेस, कंप्यूटर यूजलेस, कंप्यूटर कोनोसी रोल नहीं. तो मन रखिबो the major components of a computer systems are divided into three parts: hardware, software and user. The first thing is hardware. What is called hardware? हमें hardware कहाँ को कहिबा, हमें hardware कहाँ को हमें कहिबा. तो हेडिंग करो समझते what is hardware. हार्डवेयर में कहाँ को कहिबा देखो पिला माने ना हार्डवेयर होची तो माने समस्त जानि थिबो. हार्डवेयर यदि हम डेफिनेशन देखिबा बुझिबा डेफिनेशन ला all the physical components of a computer system, all the physical component of a computer system are known as hardware. आर अर्थ कोन जे गुटे कंप्यूटर जेति की फिजिकल पार्ट अछि गुटे ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स और हमें ये कंपोनेंट्स बदल हमें लिखि दो ना इट लाइक पार्ट्स all the physical parts of a computer system are known as hardware. गुटे कंप्यूटर जेति की फिजिकल पार्ट्स अछि ताको हमें कोन कहबा ताको हमें हार्डवेयर बोली कहबा. त क्वेश्चन आसला सर व्हाट डू मीन बाय फिजिकल कंपोनेंट कोन ना फिजिकल कंपोनेंट हैला फिजिकल कंपोनेंट मींस लिखि दोछि एटी फिजिकल कंपोनेंट्स मींस और फिजिकल parts means the device to which we can touch and see. जहाँ को हमें देखी परिवा, जहाँ को हमें छुई परिवा, which is very important. जहाँ को हमें देखी परिवा, जहाँ को हमें छुई परिवा, से गुड़ी को उरे कंप्यूटर जो पार्ट को हमें छुई परिवा, जो पार्ट को हमें देखी परिवा, से गुड़ी को देखी परिवा एवं एठी एंड लागुची और मुह तो देखी परिवा एवं छुई परिवा से गुड़ी को हमें कौन कहबा हार्डवेयर बोली कहबा. तो तुमे माने एबे डिसाइड करो जो डायग्राम टा मु तुमको कहि दे गली से डायग्राम रो को पार्ट को तुमे माने छुई परिवो को पार्ट को तुमे छुई परिवो एवं देखि परिवो. कंप्यूटर जो पार्ट को छुई परिवो एवं देखि परिवो सेही पार्ट को कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस बोली कहवा जाय. मन रहला जदि डाउट अछि मु जो नंबर देछि से नंबर रे तुमे मते कांटेक्ट करि परिवो. मु तुमको डिटेल्स गाइड करिवि जे हाउ टू अंडरस्टैंड these things. Okay, so all the physical parts of a computer systems are known as hardware. Physical part means the device to which we can touch and see. आमे जाको देखि परिबा, जाको छुई परिबा, ताको आमे कोन कहबा हार्डवेयर बोली कहबा. तेनो जदि आमे एग्जांपल लेखिबा बुझिबा, जदि आमे एग्जांपल लेखिबा बुझिबा कारो हार्डवेयर एग्जांपल लेखिबा कोन होबो ना हमर सिस्टम कैबिनेट हे परिबो. सिस्टम कैबिनेट हे परिबो किबा ताको आमे सीपीयू बोली भी लेखो. आमे सीपीयू बोली लेखि परिबा, मॉनिटर लेखि परिबा, माउस लेखि परिबा, कीबोर्ड लेखि परिबा एटसेट्रा. अब जहां भी यूज होए कंप्यूटर जहां को हमें छुई परिबा, देखि परिबा, से सबुडा छुई परिबा एवं देखि परिबा से गुडी को सबुडा को हमें कोन कहबा ना दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर. So very important, all the components of a computer systems are divided into
three parts: hardware, software, and user. And out of them, first one is hardware, and the definition of hardware is all the physical parts of a computer system are known as hardware. Physical part means the device to which we can touch and we can see. आमे जाको देखि परिबा, छुई परिबा, से गुडी को आमे कोन कहबा? तब आमे हार्डवेयर बोली कहबा. And the examples are CPU, monitor, mouse, keyboard, etc. Next time जिबा काकू ना सॉफ्टवेयर को जिबा. एटा हला सरिला, एटा तमर हार्डवेयर सरिला. एबे जिबा आमे कोन की जिबा? ना आमे सॉफ्टवेयर को जिबा. What is the actual definition of software? Software आमे काकू कहबा? आमे सॉफ्टवेयर आमे काको कहबा? ना सॉफ्टवेयर हैला, सॉफ्टवेयर जे आमे डेफिनेशन दिबा. सॉफ्टवेयर डेफिनेशन कोन? ना all the applications and programs. आ केते समय अछि रे? all the applications and programs used in computer to operate it are called as software. बुझी पारले पिला माने जे गुटे कंप्यूटर रे जति के एप्लीकेशंस एटा अंडरलाइन करूची. गुटे कंप्यूटर रे जति के एप्लीकेशन और प्रोग्राम हम यूज करू. It may be a movie, it may be a game, it may be PUBG, it may be whatever it may be. That you know. Then all the applications and programs used in computer to operate it are called as software. Computer रे जो जहाँ भी जिनिस हमें व्यवहार करू, कंप्यूटर को चलेवा पाई, कंप्यूटर को यूज करिवा पाई, से गुडी को हमें कोन कहू? से गुडी को हमें सॉफ्टवेयर बोली कहू. And these are the logical things. These are the logical things to which we can only see but cannot touch. जाको हमें केवल इटा बेर मन रखो only see but cannot touch. अर्थ जे सेही उडा होची लॉजिकल थिंग्स. कंप्यूटर जहा भी देखा जाउची, कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन रे हमकु जहा को देखा जाय ताको लॉजिकल थिंग्स बोली कहवा जाय. जहा को केवल हमें देखि परिबा किंतु कोनोसी प्रकार ताको छुई परिबा नाही. तो मन रखिबो all the applications and programs used in a computer system to operate it is called as or are called as software. And these are the logical things जहा को केवल हमें देखि परिबा ताको हमें छुई परिबा नाही. एटा हला हमर सॉफ्टवेयर डेफिनेशन. आउट अति साधारण भाषा रे कहबा को बोले from the start of the computer till shutdown. कंप्यूटर स्टार्ट करबा टु आरंभ करी कि शटडाउन करबा भितरे, स्विच ऑफ करबा भितरे, टर्न ऑफ करबा भितरे, whatever we are watching on a monitor, हमें मॉनिटर रे जहा देखू, it may be a game, it may be a movie, it may be some text, numbers, any जहा भी पूरा वॉलपेपर जहा भी हमें देखु छु, all these things are called as software. पूरे मॉनिटर स्क्रीन रे हमें जहा देखू, जहा कंप्यूटर स्टार्ट करबा टु कंप्यूटर स्विच ऑफ करबा भितरे हमें जहा देखू, से गुड को हमें सॉफ्टवेयर बोली कहू. एंड द एग्जांपल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर जे हमें कहबा सर मैं एग्जांपल देखबा को जिबा कोन होई परिबो. एग्जांपल हला गेम हेई परिबो, विंडोज हेई परिबो, एमएस पेंट हेई परिबो, एटसेट्रा बहुत अच्छी, बहुत किछि अछि. हम अल्प किछि देखुछो आ परवर्ती क्लास गुडी का हम डिटेल्स पढिबा. तो गेम, विंडोज, एमएस पेंट्स, एटसेट्रा, these are various examples of computer software. Okay, so let's see. Okay, so let's see. Acha. So these are the various examples of software. Then last one is called our computer hardware software सरीगला परे लास्ट जोटा अछि से विषय हम टिके डिस्कशन करबा, which is very important. It is last but not least. It is called user. User का कहबा ना, user के ता डेफिनेशन कोन? Who uses the computer? Who uses the computer?
है कि कंप्यूटर को जे व्यवहार करे ताको हमें कोन कहबा ताको हमें यूजर बोली कहबा इट मे बी यू इट मे बी मी इट मे बी एनीबॉडी है कि जे कौन से लोक ही पारे तुमे ही पारे मो ही पारे जे गोटे कंप्यूटर को व्यवहार करूची ताको सही समय पाई से कंप्यूटर होची सी होची यूजर these are the various components of a computer system these are various components of a computer system and next class we will discuss about other various things important things of computer तेना तुमे माने घरे रुआ सेफ रुआ समस्ते सरकार कहउतला नियम गुडी को मानो समस्ते आराम से रुआ आ जहा पाठ तुमको ऑनलाइन माध्यम रे पढ़ा जाउची से गुडी को घरे बसी के तुमे पढ़ो थैंक यू